गुरुपूर्णचिन्त्यै सदैव क्रियायात् ससुखोद्भवा दुःख सदैव चिन्त्यम्। गुरुपूर्णचिन्त्यै सदैव क्रियायात् ससुखोद्भवा दुःख सदैव चिन्त्यम्। मनुष्य सांस लेता है और पशु भी सांस लेता है। पशु भोजन करता है और मनुष्य भी भोजन करता है। पशु संतान पैदा करता है, मनुष्य भी संतान पैदा करता है। मगर वे हमसे ज्यादा समाज में उन्नतिशील नहीं है, समाज में गतिशील नहीं है। उनका किसी प्रकार से मान सम्मान नहीं है। धन के माध्यम से जीवन में ऊंचा नहीं उठा जा सकता है। सुंदर शरीर के माध्यम से भी जीवन में ऊंचा नहीं उठा जा सकता। केवल जीवन में ऊंचा उठने की प्रक्रिया जो है वह केवल उस चिंतन के माध्यम से है जिसके माध्यम से एक सामान्य मनुष्य पूर्णता तक पहुंच सकता है। एक सामान्य नर नारायण तक पहुंच सकता है। एक सामान्य व्यक्ति उस प्रभु के दर्शन कर सकता है जो जीवन का आधार है, जो जीवन का चिंतन है। और यदि हम दर्शन नहीं कर सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मगर ऐसी बात तो मुझसे पहले भी कई सैकड़ों लोगों ने आपको कही है। मैं तो इसमें नई बात कुछ कह नहीं रहा हूं। वो लोग भी यही कहा है कि हमें जीवन प्रभु के दर्शन होने चाहिए, और मैं भी यही बात कह रहा हूं, जीवन प्रभु के दर्शन होने चाहिए। और पिछले 1000 वर्षों से यही बात लोग कहते आए हैं और मैं भी कह रहा हूं। फिर अंतर क्या है? कहने और करने में मूलभूत अंतर है। अगर ये कहें कि हम लोग राम राम करेंगे, राम जी के दर्शन हो जाएंगे, तो नहीं हो सकते, ये संभव नहीं है। यदि हम कहेंगे कि भोजन करें और भोजन से पेट भर जाए, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए तो खाना बना करके पेट में डालने की प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। केवल मंत्र जाप और केवल ईश्वर का ध्यान लगाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, मानसिक शांति हो सकती है। ये दोनों अलग अलग अंतर हैं। हम जब ध्यान लगाने की प्रक्रिया करें और यदि हम ये कहें कि हम ध्यान लगा लेते हैं, तो यह केवल हमारी न्यूनता है, हमारी कमजोरी है, ये हमारा एक घमंड है, ये हमारा गर्व है कि हम ध्यान लगा लेते हैं। ध्यान आप लगा नहीं पाते। ध्यान का मतलब यह है कि हमारा अस्तित्व हमें ज्ञात ही नहीं हो, हमें पता ही नहीं पड़े कि हम बैठे हैं, हमें पता ही नहीं पड़े कि हम कुछ हैं, बिल्कुल डूब जाएं। ऐसा नहीं पता पड़े कि पास में कोई आवाज आ रही है या रसोई में कोई बर्तन की खड़खड़ाहट आ रही है। यदि वो कुछ आवाज सुनाई नहीं देती तो समझना चाहिए ध्यान है, अन्यथा तो ध्यान नहीं लग सकता है। और हमारे ऋषियों मुनियों ने, योगियों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, इससे पहले भी जिन लोगों ने आपके सामने प्रवचन किए होंगे, उन लोगों ने यही बातें कही होगी कि ध्यान लगाना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए, मंत्र जाप होना चाहिए या राम राम करना चाहिए। प्रैक्टिकल कुछ तथ्य नहीं आया आपके सामने। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं आएगा तब तक, अभी आप 45 साल के हो गए हैं, फिर यही सोचते सोचते 55 साल के हो जाएंगे, फिर 70 साल के हो जाएंगे, फिर समाप्त हो जाएंगे। और ये सोचते रहेंगे कि हमने राम नाम का मंत्र जाप तो किया था, या कृष्ण का मंत्र जाप किया था, या मंदिर में जाकर दर्शन किए थे। ये तो केवल आधार है, बेस है। इसके माध्यम से जो श्लोक में बताया गया है कि हमें एक मामूली मनुष्य से पूर्णता तक पहुंचना है, उस पूर्णता की परिभाषा क्या है? और यदि हम पूर्णता की परिभाषा ज्ञात नहीं है तो पूर्णता तक पहुंच नहीं सकेंगे। यदि हमें यह ज्ञात नहीं है कि कनॉट प्लेस पहुंचना है, अगर लक्ष्य मालूम नहीं है तो हम कनॉट प्लेस नहीं पहुंच के करोड़ बाग पहुंच जाएंगे। जाना तो कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस का रास्ता मालूम नहीं है। और साधुओं ने, योगियों ने आपको कहा कनॉट प्लेस जाना चाहिए बच्चे, वही शांति मिलेगी। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरीके से कनॉट प्लेस पहुंचे, और किस तरीके से। जब आपको तरीका ज्ञात नहीं होगा तो जीवन में उन्नति नहीं हो सकती, कनॉट प्लेस नहीं पहुंच सकते, प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते। और प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते तो प्रभु में विलीन भी नहीं हो सकते, और प्रभु में विलीन नहीं हो सकते तो पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए वेदों में कहा गया कि, ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हम पूर्ण हैं और पूर्णता में विलीन होने पर ही पूर्ण हो सकते हैं। हम तो, प्रभु ने हमें पूर्ण बनाई, 2 आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, कोई कमी तो रखी नहीं, प्रभु ने कोई कमी नहीं रखी। मगर यह पूर्णता, उस पूर्णता में पहुंचेगी तो पूर्णता प्राप्त होगी। ये एक अधूरी पूर्णता है। केवल मेरे प्रवचन से सुनकर के आप पूर्णता में नहीं पहुंच सकते। उसको जब आप प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में उतारेंगे तो पूर्णता पहुंच सकेगी, पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तब उस प्रभु के साक्षात दर्शन हो सकेंगे जिनको शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है, कृष्ण कहा गया है, राम कहा गया है, बुद्ध कहा गया है, महावीर कहा गया है, जो कुछ भी उनके नाम रखे गए हैं। जब हम उनसे पूरे आत्मसात कर सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं, उनमें बिल्कुल विलीन हो सकते हैं, उनमें अपने आप को निमग्न कर सकते हैं, और जब निमग्न कर सकते हैं तो उसमें जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है, जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। फिर जीवन में बुढ़ापा अपने आप में कोई व्याप्त नहीं होता है, बुढ़ापा कोई तकलीफ नहीं दे सकता, फिर जीवन में अभाव को तकलीफ नहीं दे सकते, फिर जीवन में कोई समस्याएं तकलीफ नहीं दे सकती। क्योंकि जैसा कि मैंने
इस श्लोक में बताया कि धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य ये पूर्णता नहीं है। अगर ये सब पूर्णता होती तो बिड़ला जी तो पूर्ण हो चुके, फिर तुम्हें कोई कमी है ही नहीं और हमसे फिर ज्यादा सुखी होंगे। यदि पैसा ही सब कुछ दे सकता है तो बिड़ला जी के जीवन में कोई कमी है ही नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य था कि ये भौतिक सुख हमें जीवन में पूर्णता नहीं दे सकते, ये केवल संतोष दे सकते हैं। ये संतोष की पिछले साल मेरे पास 4 लाख रुपए थे, अब 4.5 हो गए। बस 50,000 तुमने बेईमानी से, छल से, झूठ से, कपट से जैसे भी कमाए, 1 लाख रुपया कमाया और कमाने के बाद में अब आप 8-9 कपड़े तो पहन के आए, 4-5 कपड़े ही पहने। अब 5 लाख रुपए हो गए तो फिर 10-12 कपड़े पहनने चाहिए थे आपको, क्योंकि 1 लाख रुपए ज्यादा बढ़ गए इस साल। और फिर पहले 5 रोटी खाते थे, 15-20 रोटी खानी चाहिए आपको। रोटी 4 ही खाएंगे आप और कपड़े 4 ही पहनेंगे, चाहे 20 लाख रुपए होंगे चाहे 50 लाख रुपए होंगे। फिर हम उस आपाधापी में, उस भागदौड़ में, उस छल कपट में जहां गुजरते हैं, उसके माध्यम से हमें मिलता क्या है? मिलता तनाव और परेशानियां और बाधाएं, अड़चने मिलती हैं, मगर उसके माध्यम से जीवन में पूर्णता नहीं मिल सकती। जीवन में हमारा मूल लक्ष्य केवल शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, आपका और आपके पिताजी का और आपके दादाजी का और आपके संगी साथियों का, आस पड़ोस का यह है कि जीवन में आनंद मिलना चाहिए। और आनंद और सुख में अंतर है। आप एक पंखा खरीद के लाएंगे घर में गर्मी में तो सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद अलग चीज है। आनंद तो यह है कि आप आनंद के साथ सो रहे हैं, मस्ती के साथ, और चाहे पंखा चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, वो आनंद है। यहां बैठे हुए हैं, सर्दी पड़ रही है और न पंखा चल रहा है और न कोई आपको ओढ़ने के लिए गर्म चाय मिल रही है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, फिर भी एक मस्ती के साथ बैठे हुए हैं, ये आनंद है। ये सुख नहीं है। सुख के माध्यम से तो भोग मिलेगा। जब मकान अच्छा होगा, जब पंखे होंगे, जब और उसमें रेडियो होंगे, ट्रांजिस्टर होंगे, टेप रिकॉर्डर होंगे, तो ये सुख तो है। मगर क्या टेप रिकॉर्डर होने से आनंद मिल सकता है? क्या आपके ऊपर पंखे हवाई जहाज चलने से, हवाई जहाज में बैठने से आनंद मिल सकता है? आनंद अलग चीज है। आनंद अंदर से पैदा होगा, सुख बाहर से पैदा होता है। बाहर से पंखा लगने पर सुख तो हो सकता है, हीटर तो लग सकता है, पर हीटर लगने के बाद भी आप टेंस में बैठे हैं, बहुत परेशानी बैठे हैं, पत्नी पत्नी की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कहां फंस गया मैं इसके बीच में, ये सारी कहां मेरे गले में फंस गई। ये जीवन में आनंद की उपलब्धि नहीं दे सकती। आनंद तो जब अंदर से आपके एक आवाज आएगी, एक चिंतन आएगा, एक ध्यान में डूब सकेंगे, एक जीवन में तृप्ति मिल सकेगी। जब जीवन में एहसास होगा कि मैंने कुछ प्राप्त किया है, मुझे कुछ उपलब्ध हो रहा है, वह जो उपलब्ध होने की क्रिया है वो आनंद है। और मैं फिर ये पूछ रहा हूं कि अगर ये नहीं है तो फिर हमारे जीवन में, पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है। हम भले ये अहमन्यता कर लें, घमंड कर लें कि हम महान हैं, बड़े हैं, हम पड़ोसी से ऊंचे हैं, हमारा मकान बहुत ऊंचा है, हम ज्यादा सुंदर हैं, यह केवल घमंड है। और इस घमंड के माध्यम से तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं। गुरुपूर्ण चिंत्यै सदैव क्रियायात् ससुकोद्भवा दुःख सदैव चिन्त्यम्। गुरुपूर्ण चिंत्यै सदैव क्रियायात् ससुकोद्भवा दुःख सदैव चिन्त्यम्. There is hardly any difference between humans and animals. Man breathes air, so do animals. He eats food, and animals do the same. Animals reproduce, and so does a human. In the end, a human dies, and so do the animals. The only difference is that animals cannot think and do not realize that they should devote themselves in the feet of God. The animals cannot decide what to do and what not to do, but a human can, and he can meditate on how to attain the state of completeness, and only the meditation as to how to attain totality can elevate the human life to great heights. Thus, even a common man can achieve the greatness of God. He can realize the divine God who is the basis and true perception of human life. And if we cannot achieve this, even after being born as humans, then our whole life is useless. But these words have been repeated often, even before me, by several great men. What I am saying is hence nothing new. And even those men had said that we should realize the form of God in our lives. I too am repeating the same thing. This statement has in fact been repeated since several thousand years.
Then what is the difference in what I am saying? The difference lies between just preaching something and following it. If someone says that one will realize the manifestation of Lord Ram just by chanting Ram, Ram, then this is not possible. If we just wish for food and speak out that may our hunger be satiated, it simply won't. For this, we will have to prepare food and then eat it. Just by chanting a mantra and meditating upon God, we cannot realize the apparent form of God. Through it, we can only achieve mental peace. There is a difference between both these states. If we try to concentrate our mind through meditation and say that we are able to do so, then this is nothing but our shortcoming, our vanity, that we are able to concentrate our minds while the third person cannot. True concentration, real meditation means that we are not aware of our own existence. We should not know where we are or what we are. It is a process of losing oneself completely in divine bliss. In such a state, we should not be able to hear even the noise and commotion around us. And if one feels that he has reached a state where he cannot hear anything, then he should conclude that he is able to concentrate. Otherwise, concentration is not possible. Our sages, ascetics, yogis and the people who have been preaching have said that we should try to go into deep meditation. We should contemplate upon God. We should chant mantras and the name of God. Till now, you have had no apparent experience, and until you do so, just think that you are now 45 years old. Soon engrossed in such thoughts, you shall be 55 years old, and then 70 years old, and finally you shall die. You feel contented that you have chanted the name of Rama and Krishna, and that you have visited temples. But these form only the foundation, the base. We are but common men, and we wish to attain totality. What is this totality? If we do not know what totality is, then we cannot achieve it. If we do not know that we have to go to Connaught Place, or if we do not know where this place is, then we won't be able to reach it. Rather, we shall end up in some other place, say Karol Bagh. We have to go somewhere, but we do not know where. The sages, the yogis, have all along preached that you have to reach some place where you will attain peace, but they have not revealed to you the way to reach this destination. When you do not know the way, then you cannot progress in your life. You cannot reach your destination, and you cannot realize the true form of God. And when you cannot achieve the manifestation of God, you cannot fuse yourself in the Almighty. Until you do not become one with the Almighty, you cannot achieve the totality of life. This is why it has been said in Ishavasyopanishad that we are complete and can achieve totality only by fusing ourselves in totality, that is God. God has given us a complete form: eyes, nose, ears, hands, legs. There are no physical shortcomings in this form, but it will attain the real totality only by coming together with the eternal totality, that is God. Our bodies in themselves constitute incomplete totality, and you cannot achieve completeness by just listening to my discourses. It is only when you make use of my preachings in your practical life that you shall reach the state of totality, and only on reaching this state will you be able to have the manifestation of God, whom the Shastras have called Brahma, Krishna, Rama, Buddha, Mahavira, and by several other names. When we fuse our souls with His divine form, when we become one with Him,
When we become absorbed in His greatness, we shall achieve totality and success in life. Then our lives shall become free from old age, ailments, problems, tensions, and then life shall not be able to give more anxieties to us. Because, as I have said in the shloka, that wealth, prosperity, respect, fame, and dignity do not constitute the totality of life. If these things meant totality of life, then Birla, India's topmost industrialist, must have achieved it. He must not be facing any problems. He must be happier than us. For if money is everything, then Birla must have no deficiency in life. I had returned from Mauritius some 15-20 days back, where some yagna for world peace had been performed. Before going to Mauritius, I had met Mr. Birla at his place. I blessed him and asked him if he was fine. He said, "Everything else is fine, but I am facing some financial crisis. Please do something about it, Guruji. Rest is okay." Now, when Birla can be in a financial crisis, then we are always bound to face such problems. Nevertheless, I said to him, "Don't worry, everything will be fine. Other than this, I hope there is no problem." He said, "Well, Guruji, what should I tell you? Actually, I am not able to sleep properly." I said to him, "Well, if you are not able to sleep, spend 2-3 lakh rupees and go and buy sleep from the market." He said, "Guruji, how can sleep be bought?" I said, "When you cannot buy sleep, then of what use is all your money? Of what use is your wealth?" He spends hours lying in the bed without a wink of sleep. At last, he has to take 2 or 3 sleeping pills, and only then does he go to sleep. We are more happy and contented than him. This is because we are able to pass away into deep sleep promptly at 8 o'clock. No amount of money can buy sleep. Money cannot satisfy hunger. Money cannot buy a healthy life, joy, or happiness. A beautiful body cannot be bought with money, and God cannot be bought with it. If you are beautiful and have applied cosmetics and perfumes, this does not mean that you will be able to see God. All these things are in fact useless. Then is there anything through which true joy can be obtained? Believe me, if there is some such thing, it cannot be one of these. For if Birla is in a financial crisis, if he has to spend sleepless nights, then we are better off, as we can at least sleep peacefully, for we do not have so many problems. He always says that he wishes to achieve the realization of God. I asked him, "What do you do for achieving the darshan of God?" He said, "I have had a temple built in my house. I do have a tight schedule throughout the day, but still I do manage to visit it, Guruji." He manages to visit it, and we come and sit here daily in search of true joy. Just think how much difference there is. We come and sit here on our own wish, while he visits it as an obligation. I don't want to criticize him, but I want to emphasize that worldly pleasures cannot grant totality to our lives. They can only offer comforts. You may feel contented that last year you had 4 lakh rupees and today you have 4.5 lakhs. Somehow, by hook or by crook, you have earned 50,000 rupees and then another 50,000. You have till now worn 4 clothes, and now that you have 5 lakh rupees, you should wear 10-12 clothes, for you are now richer by 1 lakh rupees. Earlier, you used to eat 4 slices of bread. Now you should eat at least 10-15 slices. But no, you will always eat 4 bread pieces and wear only 4 clothes, even if you earn 20 lakhs or 50 lakhs. Then what do we achieve?
from all the troubles we take and all the deceit and dishonesty we resort to in order to acquire wealth. We only get tensions, problems, and anxieties in return. We do not achieve totality through this medium. The basic aim of our lives and the lives of all our relatives and friends is to achieve joy and happiness in life. This is what the ancient scriptures, the Shastras, Puranas, Vedas, and Upanishads have expounded. There is a difference between contentment and joy, between pleasure and happiness. If you are feeling hot, you buy a fan. What you shall achieve will be comfort and not joy. Joy is something quite different. Joy means that you are able to sleep well whether there is a fan or not. If it is severely cold and you do not have anything to cover yourself with and still you remain happy, then this is true joy, not comfort. Through comforts, you shall only gain pleasure. You have a house with fans, furniture, radio, tape recorder in it, then this is nothing but a life of comforts. But can a tape recorder give joy to you? Can you get joy by flying in an aeroplane? Joy is something else. Joy is generated from within, while comforts are acquired from the outside. You may gain comfort by using a fan. In cold, you can switch on a heater, but what's the use if at the same time you remain in tensions, have a quarrel with your spouse, and think, "Oh God, how did I ever get into this mess?" This is not the way to attain joy in life. Joy is something you shall feel flowing from within. A voice will be heard. A thought shall pervade your mind. You shall go into deep trance and you shall attain a fulfillment in your life. Then you shall realize that you have acquired something. And the process of this achievement is true joy. I ask you, if this is not so, then what is the difference between our lives and that of animals? We may feel vain that we have so many worldly possessions, that we are more well off than others, that we are more beautiful. But all this is false pride, and we shall gain nothing from this arrogance.